अच्छा, एक टैबू How? ब्रेक करते हैं, डू पिकअप लाइन वर्क्स? Pickup lines are just a beginning. लाइक व्हाट इज द आइडिया इनसाइड अ गर्ल्स हेड कि फेमिनिज्म क्या होता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. If you like a person, be direct. ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है लड़कों के साथ कि वो सोचते रह जाते हैं कि What do girl expect from a guy? Like break it down. be genuine, be yourself. Attraction at first sight का जो concept है, this is very vague and superficial. It does not work in the long term. Bullshit. Total bullshit. आई नो कि बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा ये सुन के. There's nothing as alpha male. मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है. Perception again, क्योंकि feminist को बहुत बदनाम already कर चुके हैं लोग. Most number of people who suicide are men. Most number of people who are road or are men. So it's not that कि everybody has to keep make an agenda out of it, right? भाई मुझे बहुत डर है कि पता नहीं क्या कमेंट्स आने वाले हैं इस पॉडकास्ट पे. The things I've said. So, welcome to the part two with ambivert Ayushi, and this one is going to be really crazy. काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं इस बार हमारे पास. हमने बहुत बातें कर ली पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, प्रोफेशनल के ऊपर, जॉब क्विट करने के ऊपर. गो वॉच द पार्ट वन इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज इन लाइफ. इस वाले पार्ट में विल बी फोकसिंग मोर ऑन द रिलेशनशिप साइड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ. एंड स्टार्ट करते हैं एक थोड़ा सा हॉट बर्निंग क्वेश्चन के साथ में. आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस. ओके, सो व्हाट्स योर टेक ऑन फेमिनिज्म एंड जेंडर राइट जो अभी चल रहा है? Like I don't know, I want to ask to like a female because मैं किसी और को पूछूंगा then I'll be categorized as something else. But like I want to ask Ayushi, like what's the idea of feminism to you? Where do you stand with it? And apart from that, the other gender thing is also going on. So क्या take है आयुषी का इस बारे में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट टैक्टिक नीरज साहब कि पहले ही आपने एकदम ही बर्निंग क्वेश्चन डाल दिया है. Okay, so this is actually a tricky one because I would categorize myself as an equalist. Not क्योंकि feminist को बहुत बदनाम already कर चुके हैं लोग, so हम्म. वहाँ category में जाने की कोई फायदा नहीं है. अच्छा. It's ruined. उसका जो actual version है वो यही है कि हम्म. equalism, हम्म. that everyone should get equal opportunities regardless of their gender, and it is inclusive of every single gender, हम्म. male, female, transgender, and everything in between. हम्म. So I stand as an equalist. Ki whoever you are, however you are, you should be given equal kind of opportunities. You should be able to pursue things that you want to pursue and be not asked question about it. कि अगर आप इस एज पे हो, आप ये करना चाह रहे हो, आप फीमेल हो, आप ये करना चाह रहे हो, और यू इवन फॉर मेल्स, इफ यू सी मेल कथक डांसर, उनको भी सेम इश्यूज है कि जो हम्म. फीमेल कॉर्पोरेट जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होंगे. सो दिस कैटेगराइजेशन, जो ये स्टीरियोटाइपिंग वाली चीज़ है, दिस इज समथिंग आई एम टोटली अगेंस्ट. अगर ये सब होता तो फिर हमारे कोई भी मैरी कॉम नहीं होती. सो ये सब चीज़ों को थोड़ा टोन डाउन करना इज माई थिंग. Like what is the idea inside a girl's head कि feminism क्या होता है? I want to understand that. Like I am not trying to judge you. I'm trying to ask you what's your concept. It may differ from anybody else. I want to ask your personal opinion कि आयुषी के दिमाग में like the true version of feminism जो start हुआ था. Now I know it's very corrupted. It has sort of become like anti-men. But I want to understand the one that is in your head. Okay, honestly, I don't sit and think about these things a Hmm. lot. Hmm. But feminism is equalism for me. It has always been. Ki agar suppose there are two people, they are making similar choices, but the man is not being judged for it. The girl is being, like, the common thing that comes is ki if a guy is in multiple relationships, say a Casanova in a college or whatever, he's being praised for it. But if something does not work in a relationship for a woman, and she's maybe been in multiple relationships, so tagged as a slut. Hasn't happened with me. This is not coming from any personal experience, but this is the things I generally see. अब अगर if you go deeper into this, then again we if we talk about tier 2 tier 3, वहाँ तो ये concept का कोई रोल ही नहीं है. फेमिनिज्म उठा मतलब कि
ये तो ऐसी है, ये रिएक्शन होता है कि फेमिनिज्म, अगर आपने बोला कि आई एम अ फेमिनिस्ट, तो अरे ये तो ऐसी ही लड़की है, साइड करो इसको. सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल इन टीयर 2 टीयर 3. अब इट कम्स टू डिस्क्रिप्शन. अब अगेन बहुत शुरुआत में अगर जाएं कि कोर कहाँ से है, तो इट इज कंडीशनिंग. कि जैसा आपने सुना है, जैसा आपने देखा है, जैसा वही आपने समझा है, एंड वैसे ही आप हर एक किसी को परसीव कर रहे हो, एंड द सेम वे यू आर बिहेविंग विथ एवरीवन. सो इट कम्स फ्रॉम दैट. सो मेरा बस फेमिनिज्म का इतना ही है कि दो सिबलिंग्स हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को इक्वल राइट होना चाहिए. एंड इट ओके, वन की थिंग आई वुड लाइक टू पेन पॉइंट हियर कि दोनों को इक्वल राइट होनी चाहिए कि वो जो भी चूज करना चाहते हैं, वेदर इट इज प्रोफेशन, वेदर इट इज पार्टनर, वट एवर इट इज, दे बोथ शुड हैव फुल फ्रीडम. कि अगर लड़का डांसर बनना चाहता है, उसको उस चीज पे जज नहीं किया जाए. अगर लड़की पायलट या कोई मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती है, शी शुड नॉट बी जज्ड फॉर इट और स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग दैट पर्सन. सो फेमिनिज्म हो या इक्वलिज्म हो, इट इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. तो ये एक मिसकंसेप्ट होता है कि अगर फेमिनिज्म है तो सिर्फ औरतों के बारे में बात होगी. नहीं, फेमिनिज्म इज ऑल्सो फॉर मैन. इनफैक्ट इट इज मोर फॉर द मैन देन इंटरेस्टिंग. women. That is my concept. तो मुझे इसमें दो चीज़ों को डाइसेक्ट करना है. एक, लाइक यू टोल्ड अबाउट कि ये स्लट शेमिंग वाला चीज़, कि ये चीज़ होती है फीमेल्स के साथ में, राइट. आई थिंक ऑन कॉन्ट्ररी फाइनेंशियल शेमिंग होती है मेन के साथ, जो फीमेल के साथ उतनी नहीं हाँ, होती. exactly, सो true. आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरीबडी वुड हैव अ प्रो एंड अ कॉन इन सोसाइटी. वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि वो सोसाइटी किस नज़रिए से देख रही है, राइट. एवरीबडी, तो यू कांट से, लाइक यू कांट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस. यू कांट से कि अगर फीमेल्स के साथ में ये चीज़ हो रही है तो मेल के साथ ये चीज़ नहीं हो रही, बिकॉज मेल के साथ में कुछ और हो रहा है, यू नो. Exactly. एंड यू नो द, आई डोंट नो इफ पीपल नो, बट most number of people who suicide are men. Most number of people who are road or are men. In jail are men. In wars are men. Who die are men. So it's not that ki everybody has to keep make an agenda out of it, right? Defense mein there is a proportion of men more than female. People who are dying in defense, high 80 to 20% ratio, it would be men. But if we create a मोर्चा out of it कि अरे यार सिर्फ लड़के ही क्यों जान दे रहे हैं देश के लिए, it sounds silly, right? बिकॉज वो उनकी चॉइस है, इट्स नॉट अ जेंडर प्रोपोर्शन थिंग. मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है पता है मुझे, जितने भी आइडियाज होते हैं ना, फेमिनिज्म, वॉट एवर, एक्टिविज्म एंड स्टफ लाइक दिस, उसकी जो डेफिनेशन होती है ना, इट्स व्हाट यू थिंक. सो आयुषी के लिए इट्स इक्वलिज्म, maybe for some other girl it's something else, maybe for some other girl it's something else, and maybe for some other guy it is something else. And that is exactly my problem. इन सारी मूवमेंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम है कि इट्स माई परसेप्शन दैट प्रोग्राम्स मी. So for example, if I feel कि मेरे साथ unfair ही हुआ है as a girl, then I will always feel that. If I feel मेरे साथ unfair ही हुआ है as a guy, I will always feel that. No matter what the movement stands for. You True. understand? तो मैं, वो तो ऐसे भी होता है ना कि लोग फ्रीडम फाइटर के ताड़ में लोग मर्डर भी कर रहे थे कि नहीं हम देश के लिए मर्डर कर रहे हैं. और एक होता है कि एक्चुअल फ्रीडम फाइटर है जिसको डिफेंस के अंदर वो करना पड़ रहा है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज थिंग्स, राइट. तो I think you cannot comprehend this thing, and that is exactly the problem with this movement. Like if you ask 10 girls or 10 guys what feminism stand for, हर एक का definition अलग होगा. There would be no consistency in that. And if there is a movement, it begs for consistency. Because अगर तुम्हारा message ही clarity के साथ में लोगों तक नहीं जा रहा है, that means it is not effective. That means it's just being like a cult classic जो बस फैले जा रहा है with no purpose. And उसकी आड़ में everybody is doing their version of feminism or their version of any movement out there, right? And ultimately ये मेरा पर्सपेक्टिव है that if I keep on shouting कि हाँ एक चीज में inequality है तो वो हमेशा रहेगी, because I am itself marketing that inequality. You understand? मैं ही अगर बोलता रहूंगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और वो जिंदगी में मैं बोल ही रहा हूँ कि हाँ हो ही रहा है इस जेंडर के साथ, तो मैं somehow उसको relevant भी रख रहा हूँ for the span of time that I am alive. बोल बोल के मार्केट कर करके, बिकॉज मैं प्रोग्राम हो ना हो, सामने वाला हो जाएगा कि नहीं यार ये इसके साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ भी हुआ ही होगा, गलत है. भले उसके साथ में हुआ ना हो, बट दे विल सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली. एंड आई हैव नोटिस दिस कि एक बात, क्योंकि यू गेट इन्फ्लुएंस बाय पीपल, राइट. इफ somebody of a Bollywood celeb or somebody is saying that, the example is Me Too movement, right. उसकी आड़ में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव.
फॉर सम पीपल इट वाज पॉलिटिक्स जिनके साथ जेन्युइनली हुआ था, एंड आई फील सैड फॉर देम, दे शुड टेक द वॉइस, दे शुड से वॉट एवर इट इज। बट उस आड़ में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठा के, जिनके साथ नहीं भी हुआ है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। Like I Exactly. know there was a tweet like कि आंखों से the girl got abused and stuff, something like that, and Hmm. it's very pathetic like कि ऐसी situations आ जाती हैं जहाँ we are sort of imbalancing it out. So just be very skeptical कि आप किस चीज से influence हो रहे हो। A lot of time you get influence by not knowing you are getting influenced. तुमको सोशल True. मीडिया में वही चीजें दिखाई जा रही है, द concepts that you like reinforced। अच्छा, इसने ये बोला, ही इज अ स्पीकर दैट आई अप्रिशिएट, देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसेप्ट बायस इन योर ब्रेन। So if you want something to be true for yourself, you will keep on biasing towards that faith. तो हाँ, यही सही है, यही सही है, यही सही है, you will watch that, यही सही है, यही, don't be that person। Try to burst your bubble, try to be, try to get out of that bubble। So that's my take, and I'm glad to know that you don't think on that terms. It's crazy these days how कि लोग क्या क्या सोचते हैं, but good to know, good to know। Let's move on to the next question, which is related to this one, uh, declining of mental health। Like I know it's overall declining, but past 100 year has been worst for men compared to women in terms of mental health, I'm speaking। Why do you think that's happening? Like why do you think like right now it's affecting more to a specific gender? Is it because of the rules? Is it because of the scams? Is it because of anything else you have in your mind? It's a combination of a lot of things. First, again, it comes down to conditioning. कि सालों से for men, they didn't know that they can actually express all their emotions. उनको वही सिखाया गया है कि if you are a man, you have to be tough. You don't show your emotions. You be even some people are taught like be rude to people so that you come as swaggy, you come as alpha male. Hmm. Uske bhi again, this is also controversial कि what is real alpha male or what are the traits. तो वो बहुत, let's not go there. Let me pause here। मेरे को ये जानबूझ के मैंने पॉज किया है ये, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा ये सुन के। देयर इज नथिंग एज अल्फा मेल। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है। Perception again. हाँ, देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एन अल्फा मेल। हाँ, what you are trying to Exactly. portray is a normal image of how a guy should be। ठीक है, सो तुम अल्फा बोलो, तुम सिग्मा बोलो, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, सेल्फ लव को तुमने एक नाम दे दिया अल्फा मेल का। लाइक यू केयर अबाउट योर सेल्फ बिफोर यू केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ डेफिनेशन ऑन सोशल मीडिया दैट्स गोइंग फॉर अल्फा। राइट, कि ऐसे नहीं कि कोई भी सामने आ गया तो तुम उसके रिलेशनशिप में जाने के लिए एकदम उतावले हो गए। राइट, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ताकि कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा सबमिसिव ना कर ले, कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ना करे। राइट, सो दीज आर नॉट any actual things, these are all concept of our minds। So just keep that in your mind, please continue। So, mental health for men specifically is a very new concept. It's nascent. अभी तक ऐसा कि हाँ, men are very strong, वो सब हैंडल कर लेते हैं, उनका मेंटल हेल्थ का कोई इशू नहीं है। तो जब तक एड्रेस ही नहीं किया तो इशू सॉर्ट कैसे होगा? अब लाइक यू सेड द लास्ट 100 years, नाउ पीपल आर इनटू अवेकनिंग। अब लोगों को समझ आ रहा है कि मेंटल हेल्थ जितना विमेन के लिए और अदर जेंडर्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट मेन के लिए भी है। And for your mental health to be good, you need to express all your emotions. जिस जो मेन चीज है उसी से ही रोक रखा है मोस्ट ऑफ द men, because they are derogated upon it. They have been demeaned कि if you're emotionally expressive then you're weak, और बहुत गंदे गंदे terms भी use होते हैं for men. So I empathize with them. And then again, they have to be very cautious when they are behaving with especially women in a certain way. So they take it as escapism कि जब हम कोई चीज को उस तरीके से address नहीं कर सकते, which is right, which is not convenient, which is tough, then we go to the alternate tangent. Then they would escape in fake masculinity. They will follow trends that are not relevant or relatable to their core personality, their core values. So I think the main thing is you need to be very strong with your core values. How do you want to become? What kind of a man do you want to be? अगर वो क्लियर है तो कोई क्या बोल रहा है, कहाँ से कितने इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट यू। और अगर वो कोर जरा सा भी हिला हुआ है, देन अगेन ये नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए ट्रेंड्स आते रहेंगे एंड यू विल कीप गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दैट।
Mental health goes for a toss when you don't know what your core values are. When you know Hmm. that these Hmm. are my core values and these are the emotions I want to feel on a regular basis. I am a gentleman. I want to be a kind person. I want to be expressive. I Hmm. want to be good with all genders, Hmm. not just women. Women are nothing special. Hmm. Women is a gender, transgender is a gender, man is a gender. Be a human, be a humanist, be a humanitarian. If I can be a same way with every person, like Zakir Khan said this in an interview, कि जब आप मर्दों को या औरतों को एज इंसान देखना शुरू कर दोगे Hmm. तो बात ही खत्म हो गई। ना आपको Hmm. फेमिनिज्म की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है। यू Hmm. आर अ Exactly. ह्यूमन इंटरेक्टिंग विद अनदर ह्यूमन। आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है दे कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेज। तो पहले टू डील विद एनी मेंटल हेल्थ इशू यू हैव टू गो टू द कोर ऑफ इट, most of which rise in your childhood, 0 to 8 years. Hmm. And people don't emphasize on this enough, which is why I'm a big fan of Dr. Meghna Dikshit, who emphasize this very strongly कि आपकी जो भी पर्सनालिटी बन रही है, जो भी आपकी वैल्यूज है, द वे यू रिएक्ट टू थिंग्स are defined by what happened to you, how you perceived things when you were 0 to 8 years old. अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप 8 साल के हो तो आप नॉर्मल चीज़ों को बहुत अलग तरीके से परसीव करोगे बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। Hmm. पर आपके ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता है। इट विल स्टिल स्टिक टू सम स्ट्यूपिड थिंग्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। और Hmm. वो ट्रिगर होता है आपके एडल्टहुड में इन वेरी वियर्ड वेज, जो ना सिर्फ आपको पर आपके आसपास के हर एक इंसान को इफेक्ट करेगा। Hmm. Which is why I emphasize a lot on inner child healing, which I am also doing on a very prominent basis, क्योंकि it is very important. Another aspect of this is कि अगर आपने ये सॉर्ट नहीं किया, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो भी हैं, जितने आपके ट्रॉमास हैं, जितने आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इफ यू हैव नॉट डेल्ट with them, you will forward them to your kids, जो हमारे साथ होता आया है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि यू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे एंड देन यू सिट बैक एंड यू थिंक कि ऐसा क्यों किया यार, ये तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। सो जेनेटिक्स आर ऑल्सो इन एक्शन। Hmm. Like when you go to the science of it, when you see the experiments that have happened, तो आपके जितने भी ancestral beings हैं, not just your parents, your grandparents, even to further generations like 7 generations, तो 7 generations तक के जो DNA है, जो genetics है, जो habits है, जो reactions है, Hmm. that comes down to you until you take charge and you reprogram them, you change them and be better for your future generations. तब तक वो वैसे ही चलते रहेगा। सो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट, आई थिंक उसके लिए एक पूरी सीरीज की ज़रूरत है कि यहाँ से शुरू होता है, देन यू एड्रेस दिस, देन यू एड्रेस दिस। बट फर्स्ट इज कि गो टू द कोर एंड देन एम्ब्रेस वट एवर इट इज़। embrace your inner child and teach, parent yourself is a better thing to say। कि आपने समझ लिया कि ठीक है, आप 8 साल तक के थे, आपको समझ नहीं थी, hence you became this person, जहाँ पे आप इतने रिजिड हो कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना ही नहीं चाहते हो। आप जानना ही नहीं चाहते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वो क्या क्या झेल के बैठा है। आप अपने ही गोल गोल बबल में अपना परसेप्शन बना के बैठ गए हो एंड यू नॉट विलिंग टू चेंज इट। बट वेन यू डू, it will help a lot to your surrounding and to your future generations. So mental health as a whole is a huge thing, but it needs to be taken seriously, but उसके बहुत सारे aspects हो सकते हैं। So I just, what I would advise is to go down to your core issues and address them. That's it. मतलब इट हैज़ बिकम वेरी ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ नाउ। पहले तो क्या ही होता था, मेंटल हेल्थ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हाँ, कि मेंटल हेल्थ इज़ which is नथिंग। exactly people are struggling क्योंकि अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी घुसा नहीं है दिमाग में। नहीं, आई थिंक एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है विच आई हैव नोटिस, आई मे बी राइट आई मे बी रॉन्ग, कि जो गर्ल्स होती है ना, दे हैव BFF का कंसेप्ट। सो गर्ल्स आर मोर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, दो भी होंगी ना तो दे वुड शेयर लिटरली एवरीथिंग, इमोशंस एंड स्टफ लाइक दैट, मच मोर देन गाइज वुड डू। गाइज में कोई कंसेप्ट नहीं होता BFF का। तो एंड वी लिटरली डोंट रीच आउट लाइक जैसे गर्ल्स होती है कि हाँ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, अपडेट्स लेना है, व्हाट हैपेंड, हु इज़ द गाय, वॉट एवर। ये नहीं होता लड़कों में। अगर मिले कभी तो कहीं 10 साल बाद मिलेंगे तो हाँ मैजिक वही रहेगा, लेकिन वी वोंट आस्क कि हाँ क्या चल रहा है, अच्छा हाँ ये हो गया, वेरी गुड, नाइस। देर इज नो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजिंग थिंग्स, लाइक वो वल्नरेबिलिटी जो होती है ना इन हाँ, गर्ल्स टू
Correct word. open up with things that are not working out is not in the guys, and I'll tell you why it is not in the guys, because nobody asks and nobody cares. The fundamental thing is that it is very taken in the society that he's a guy, he'll handle it. अगर लड़की है तो पूछो जरूरत है क्या, विच इज विच जिसको दोनों पार्टी नेगेटिव कोनोटेशंस में लेते हैं कि अरे लड़की तो पूछने की जरूरत है क्या, नहीं कर सकते क्या हम, तो वो अलग वे में लेते हैं नेगेटिवली, एंड लड़के तो वो अलग वे में लेते हैं कि यार कोई तो पूछ लो. द पॉइंट इज देर इज अ बैलेंस टू थिंग्स, राइट, कि पूछना भी जरूरी है और कभी कभी नहीं पूछना भी जरूरी है. समटाइम्स यू हर्ट व्हेन यू हेल्प, समटाइम्स you help while hurting them. So it's more often like you need to understand कि दोनों चीज़ों का एक बैलेंस है. एंड अगर कोई बंदा किसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स बिकॉज जैसे तुमने जेनेटिक रीजन दिया कि ये बचपन से वो देखता है कि नोबडी केयर्स, नोबडी आस्क्स यू कि हाँ हफ्ते में क्या हुआ है. डैडी इश्यूज आर वेरी कॉमन. व्हाई इज इट वेरी कॉमन? बिकॉज guys have that trait of not opening up as emotional guys. तो डैड इज नॉट गोना, मे बी वो अपनी बेटी को पूछ लेगा कि हाँ बेटा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि दे आर मोर प्रोटेक्टिव ऑफ डॉटर्स. दे आर नॉट प्रोटेक्टिव ऑफ गाइज एज सन्स इन दैट स्पेस. तो दे वोंट आस्क यू कि अरे यार आज कुछ हुआ क्या, कॉलेज में कोई ज़रूरत हुई क्या, अरे लड़का है ना संभाल लेगा सब, क्या ही ज़रूरत है पूछने की. देर इज नो क्यू एन ए हैपनिंग. And when there is no Q&A, there is no feedback loop. When there is no feedback loop, there is no relation. There is no relation, then there is no release of emotion. So it all is very sequential. So I think parenting पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा attention को divert करना चाहूँगा. I definitely feel that parenting plays a huge role of how a boy becomes a man or a girl becomes a woman. They see you, they perceive you, even when you are not trying to teach. So as a child, you get things even without asking, whether it's mental trauma, whether it's habits, whether it's good habits, whether it's bad habits, right? So I think that's why men and women both are the way they are because of the reactions that they have got, right? So कुछ लड़कियां शर्माएंगी बोलने के लिए कि वी वेंट टू अ पार्टी बिकॉज पीपल विल जज. कुछ लड़के शर्माएंगे ये बताने के लिए कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है बिकॉज पीपल विल जज. सो जजिंग का पैरामीटर अलग है, जज तो होना ही है. सो आई थिंक द True. आइडियल सोल्यूशन इज who cares if you're being judged, like unless and until you care that somebody else's opinion about you matters than more than your opinion about yourself, then you are in a cage that nobody can release you from. तुम अपने ही केज में हो फिर, बिकॉज यू आर True. लॉक्ड हियर, नॉट इन somebody else's thought. उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Nobody's gonna remember even Elon Musk after 100 years, right? Everything fades away. We are nothing but a tiny speck in both dust and in time. सो हम लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं, अरे हमारी जिंदगी को तो हमें अमर कथा बनाना है. कोई भी कथा कितनी भी अमर हो, समय के सामने समय सबसे बड़ा बलवान है, सब उड़ने वाला है. सो पीपल हैव फॉरगॉटन गॉड्स आफ्टर सेंचुरीज मिलेनियर्स. हर गॉड फेमस नहीं है जितना कृष्णा भगवान ने है, बट इनपुट तो सबका हुआ है ना. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे ने सब कुछ कर दिया और किसी ने कुछ किया ही नहीं है, बट यू डोंट रिमेंबर एवरीवन बिकॉज टाइम. बट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्जेशन रही है ये, एंड आई डू अग्री कि अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेंटल हेल्थ कम डाउन टू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे हमेशा ज़रूरत थी. इट्स नॉट अबाउट दिस जनरेशन, हमेशा थी. नाउ यू नो द टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू. नाउ इट्स ओके टू बी वल्नरेबल. आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट some people, some guys out there know कि हाँ ठीक है, it's okay to cry, it's okay to I ask for so help. wish everyone does. Like you said, it's the problem of normalization and generalization. Like you said कि लड़कों में ऐसी बातें क्यों नहीं होती. You will have to normalize this. जैसे कि जो चीज़ें बिल्ड हुई है कि लड़कियों को क्यों, इट इज, अगर आपका ग्रुप है, अगेन ट्रीट देम एज ह्यूमंस ना. इसमें क्या बड़ी बात होगी इफ अ गाय इज क्राइंग, इफ अ गाय इज एक्सप्रेसिंग. अगेन वो फिर कंडीशनिंग पे आ जाता है कि हमारे घर पे ऐसा नहीं होता, हमने नहीं देखा, हम नहीं रिलेट करते इससे, हम नहीं सुनेंगे. सो दे डेरोगेट देयर फ्रेंड कि क्या ये लड़कियों जैसे रोना धोना मचा रहा है क्या, हटाओ इसको. तो अब Hmm. उसके आगे कि यार कोई सुनता ही नहीं है, तो उसका लिमिटिंग बिलीफ बन गया अब तो कि कोई सुनता ही नहीं है. तो अब वो Hmm. दोबारा ट्राई करने से भी कतराएगा, विच विल लीड Hmm. देम समडे टू अ थेरेपी बॉक्स, कि अब थेरेपी में जाके बोलूंगा और कोई तो सुन ही नहीं रहा है.
But we need to normalize this is a very crucial problem ki why in men group it is not a normal thing to talk about emotions. तुम लोग दुनिया भर की जब बातें कर सकते हो, इमोशन इज अ वेरी imperative थिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस. So it is very much needed, at least in this generation now, to generalize talking about emotions. Because if you are not allowing your male friends and not listening to them when they are sharing their emotions, you will do the same to your children also. और फिर तुम अपनी वही लय में चलते रहोगे and you will create more effed up men, which will hurt men and women and children. अम, मैं बस मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, तो सुनने वाले बनो. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, irrespective of gender, irrespective of anything else. Be somebody who genuinely listens with care, because if there is nobody to listen to, you wouldn't want to speak, and that's a fact. Like there's a lot less people who can speak with themselves at that caliber कि हाँ मैं खुद से बात करके भी संतुष्ट हूँ. But at some other level as a human you have a tendency कि चलो यार मैं अपना ही दर्द किसी से बांट लूँ. So I know for a man, it is difficult because I I can tell that people don't listen, but definitely do try. It might be difficult in start sometimes, but yeah, if you get into the habit of it, it's good. It's good. So बस जज होने से मत डरो, जज तो वैसे भी होना ही है, तो इवेंचुअली तुम कुछ भी कर लो, जज होना है, तो why not do what you want if you are going to be judged irrespective of it. Yeah. So And if quite men are not listening, go to women, which is again a debate कि women कहाँ सुन रही हैं. But it is, I think this is why best friend का concept like intergender is very नहीं, popular they do listen, they because do listen. I feel that's why वो concept आया ना, वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान और उसकी कि बेस्ट फ्रेंड लड़की ही होनी चाहिए, because then you can have a lot of conversations, right? वो dynamics थोड़ा सा stable हो जाता है कि हाँ हाँ शी इज नॉट गोना जज यू फॉर बीइंग इमोशनल, एंड देन यू हैव दैट सेफ्टी एस्पेक्ट कि एक लड़के का ह्यूमर भी आता है. एंड आई थिंक इट बेस्ट friend for a guy can be a female friend. Like I'm not talking about girlfriend, but I'm talking about yeah as this अगर is कभी कोई true. BFF हो, then I think, and a lot of girls prefer making male friends, like ऐसे that zone के अंदर they feel Hmm. good. I've seen this even with some of my friends that they have best friend as guys, not girls. So I think Yeah. that helps a lot. तो ये हैक दे दिया हमने लोगों को, लड़की को ढूंढो, ईमानदारी से बोलना कि दोस्त बनो, अगर इंटरेस्टेड हो तो टॉर्चर मत Exactly. करना. ये करेक्ट है. लाइक इवन माय बेस्ट फ्रेंड्स आर बोथ, लाइक आई हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड, आई हैव अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड. दोनों से अलग अलग टाइप की बातें होगी, बट एट बोथ प्लेसेस आई एम शेयरिंग इमोशंस, आई एम शेयरिंग प्रोफेशनल टॉक्स, आई एम शेयरिंग इंटेलेक्चुअल टॉक्स. सो इट इज अगेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन ह्यूमंस. बट हाँ, जो मेल फीमेल में बात ये हो जाती है कि यू आर ऑल्सो इंट्रीग्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स ऑफ द अदर जेंडर. इसीलिए दैट डायनामिक वर्क्स बेटर, कि आपको इंसाइट्स भी मिल रही है कि अच्छा लड़कियों का दिमाग ऐसे चल रहा है. ओके, सो इफ आई लिसन, इफ आई जस्ट लिसन, उनको सोल्यूशन ना देके इफ आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रॉब्लम इज एंड जस्ट से कि हाँ ठीक है यार, अभी है, हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स ओके टू फील दिस वे, इट विल पास. Hmm. सो दे गेट दिस. एंड ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो कि अच्छा ये तो सुन रही है, अभी तक मुझे लगता था कि कोई सुनता ही नहीं है. लाइक आई Hmm. गेट दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स कि तुम बोलती कम हो, विच इज रेयर फॉर अ गर्ल while on call, and you're a good listener. I have not seen that enough. So I was like कि ये तो मेरे लिए shocking है, क्योंकि listening is a common skill that everyone should have. So there are a lot of insights involved in a male-female best friendship, and it is True. beautiful. It is amazing for self-growth also, in both ways. सो हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते क्वेश्चन को, मेंटल हेल्थ हो गया, फेमिनिज्म हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, अ लॉट ऑफ डीप स्टफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, डू यू बिलीव इन सोलमेट? Oh my god, that was a hit. Okay, बताओ बताओ. so soulmates के actually बहुत सारे concept होते हैं. So if we break the syllables down, it is soul and there's mate. सो एसेंशली जो आपकी सोल है उसको नहीं पता है कि इफ इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल. सो योर सोल मेट कैन बी एनी थिंग एंड लाइक एनी पर्सन, एनी लिविंग बींग.
So it can be your dog, it can be your mother, it can be your best friend, it can be your boss, it can be your father, it can be your brother, your siblings, it can be anyone who is your soulmate. और एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी सोल की जर्नी होती है दैट गोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर. सो इन योर वन लाइफ टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल फाइंड योर सोलमेट, बट देयर एंटर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स कि आपका एक सोलमेट हो ऐसा जरूरी नहीं है. So at any given point of time, there can be 7, 8 soulmates who are good for you, क्या बात either है. as partner or as friends, whatever it is. Okay, so in a lifetime, you might not find your soulmate, but you will definitely find these twin flames who are good for you, who will help you grow faster, who will help you become a better person. That is what I think soulmate is. When you meet your soulmate, you become better, you grow in life at a in a way that you always desired to do. So soulmate and twin flame can be anyone. It's not ideally a partner, but it can be. If that happens, it's the best case scenario. So this is my understanding of a soulmate or twin flame. But yeah, I would pretty much want to have one. मतलब डू यू बिलीव इन इट, मतलब मुद्दे की बात ये है कि हाँ I do. मानती I हूँ. do believe. अच्छा, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि तुम बिलीव करते हो कि नहीं, तुमने 7 तरह कॉन्सेप्ट ला दिया. अब यहाँ पे लोग, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे कि 7-8, हम तो 1 माँग रहे थे. आप बोल रहे हो 7-8 हो सकते But हैं. I'm also specifying that it does not need to be a relationship partner like a male female partner. It can be a dog, it can be a pet, हाँ, it can be a friend, anyone. जिसके घर पे डॉग है उसने तो एक एक गिन लिया अपना, एक हो गया. एक एक तो मैंने मान लिया. ये जो भी मेरे घर पे मेरा पार्टनर है, एक तो यही हो गया. बाकी 6 का पता लगाना है. एक तो मेरे पास ही है. तो जिनके That, पास भी डॉग that है, is a पेट है, connotation. It's not literal. मतलब लोग ले लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ. सो Nahin, please इंटरेस्टिंग do. टेक, इंटरेस्टिंग टेक. मतलब तुम मानती हो सोलमेट के अंदर, I बट do. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट इन योर सोलमेट. इट कैन बी एनीथिंग, एनीवन. मसाला है, तड़का है. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टेक. मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये बड़ा डायनेमिक आंसर आया है. सो मतलब वो इंटरेस्टिंग मैन. एक के बदले 7. Okay, so let's move this to something more accurate, I would say. इसमें थोड़ा सा precise तरीके से आंसर करना. Now I'm trying to help the guys out there. So since I can ask you this, so according to you, like, what do girl expect from a guy? Like, break it down. I'm a stranger. Like, first let's start with this. कि एक बंदे में क्या होना चाहिए for a guy to be attractive or worthy enough of a girl's attention? Let's start from there. I saw this one coming. But now you need to answer it too. Okay, so again, yeah, I cannot give a precise answer because Your answer. कोई भी चीज जनरल नहीं होती. So criteria for every girl is different. हर लड़की अपने desired partner में अलग अलग चीजें ढूंढ रही है. Some girls are money minded, जिनको gold digger लोग बोलते हैं, but I don't think that's wrong either. If you want money, if you want a very established successful man, that good for you, works for you, okay. So that can be a criteria for one girl. Next girl wants कि मुझे बस कोई सुनने वाला चाहिए. So then there would be qualities like caring, understanding, affectionate, romantic, loving, or expressive, like we talked, emotionally mature. This can be one criteria for a girl. Then another girl who is just superficial for the looks, for how the person is looking. So फिर उसको biceps चाहिए होंगे, उसको abs चाहिए, उसको back चाहिए, उसको shoulder चाहिए, a good personality, good looks. फिर वो आपको compare करेगी कि ऋतिक का ये चाहिए, इसका ये चाहिए, उसका वो हाँ, चाहिए. Those 3-4 kind of लोगों girls को are मिला also के there. एक आदमी बनाओ, हाँ, आइडियल कि एक बंदा. हाँ, वाह. मॉडल बना के दो, ला के वाह, दो. सही है So भाई. those kind of girls are also there. Then there are key. I just want a professional partner. There are even concept of open relationship where there is no physical intimacy. So ऐसे भी couples हैं कि I just want a best friend in my life to be my partner. They are married, they live their life, and we are professional and emotional partners. So there are girls also who look for that. पता नहीं था मुझे ये. Reciprocation is also. मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि अब बोलेगा कि इससे पूछो लाइफ कुछ, ये कोई नई कॉन्सेप्ट ला के बता लाइफ रही. लाइफ कीप्स ऑन सरप्राइजिंग मी. मतलब मैं सोच रहा था कि ये सिचुएशनशिप सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है. अब तुमने नया ही कुछ निकाल दिया यहाँ पे कि प्रोफेशनलशिप. ये But these are facts. These are facts. There are आई अगर एम नॉट डिनाइंग. situationship है
तो वहाँ ओपन रिलेशनशिप्स भी है. Coming Hmm. down to, if I can say it with my understanding of what women might or should want, is compatibility. इट ऑल कम्स डाउन टू कंपैटिबिलिटी. अब कंपैटिबिलिटी किस चीज़ों से बनेगी कि आपका थॉट प्रोसेस सेम है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सेम लेवल के इंटेलिजेंट हो या नहीं, आप सेम लेवल का पैसा कमा रहे हो या नहीं. गर्ल्स लुक फॉर कि इफ देर इज एवर अ वर्स्ट केस सिनेरियो, कभी भी कुछ भी ऐसा होता है कि आई एम इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, तो दिस पर्सन दैट आई हैव पुट माई लाइफ एंड माई लव एंड माई एक्सपेक्टेशंस ऑन, he would stay or he would run away. बस इसी That क्वेश्चन का is my आंसर core. डिसाइड करता है. लाइक इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर लड़का रुक गया तो ही इज इन, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में लड़का भाग गया देन ही इज नॉट वर्दी. लाइक ट्राइंग टू Yeah, basically, अंडरस्टैंड. yeah. My criteria comes down to reliability. If I can rely on this person कि मैं कुछ भी express कर सकती हूँ, I can share literally anything with this person. बी योरसेल्फ. And yeah, I can be myself, I can be mad, I can be crazy, I can be childish. I am not afraid to express the deepest, darkest secrets. दैट And टू विदाउट he would जजमेंट. not, yeah, I was just about to say that he would not judge, but try to understand. एक और क्राइटेरिया मैं सोचती हूँ कि इफ लाइक आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स हैपन इन एवरी रिलेशनशिप, सो इफ you are even in a fight or in an argument, you will be respectful with it. So respect is a very key factor. So if you're noting down, note down the words: caring, affectionate, understanding, mature, respectful. And so these are the things कि अगर आप फाइट करते हुए भी एक दूसरे को डिमीन नहीं कर रहे हो, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप लड़ रहे हो, ठीक है, लड़ो, खूब चिल्ला चिल्ला के लड़ो, शाउट, fight, but do not demean each other. The second that happens, अगर आपने एक दूसरे को डिमीन कर दिया, respect went away. Respect गई within a few minutes, within a few time span. If respect is gone, loyalty will be gone. अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद. इंटरेस्टिंग. So it is a cycle of emotions. So I'm not saying, like you asked me कि specifically what a girl want in a guy. I just don't see things at guys or girls. I see things at perceiving. Perception is everything for me. अच्छा, So this is, I would say, go for emotions. तो How मैं the रिफ्रेश करता person. हूँ ना इसको. आई लेट मी रिफ्रेश इट. आई वाज कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन. लेट मी मेक इट मोर स्पेसिफिक फॉर यू. सो अब मैं ये बोलूँगा कि एग्जाम्पल के लिए आई एम अ स्ट्रेंजर. ठीक है, आई डोंट नो यू. We met in some event wherever I am. So if a guy generally likes a girl or interested is in a girl, how would a girl want a guy to approach him in a way that doesn't make them feel weird but appreciative of the fact कि हाँ ठीक है बंदा genuinely was interested in me, maybe I can give some time back. Like I want to, जो लोग बाहर ऐसे हैं कि जो अंड पतंग हरकतें करते हैं उससे बेटर एक अच्छा मेथड बताओ जो एक नॉर्मल इंसान, एक सेन पर्सन, और उसको एक लड़की अप्रिशिएट भी करे कि हाँ ठीक है उसने अप्रोच किया, फ्लर्ट किया. आई डोंट नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू राइट. मतलब अभी के ज़माने में थोड़ा उस, आई डोंट नो, हर बंदे को अलग ही लेवल पे जज कर लिया जाता है कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग. बट आई जस्ट वांट टू नो, आई एम अ स्ट्रेंजर, आई डोंट नो यू. How do I approach a person I don't know if I'm interested in that person, staying in my limits where she feels comfortable and approached? ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस आई कैन आंसर प्रिसाइसली, ये मैं डायरेक्टली Thank बता you. सकती. Okay, so the thing is, first, be genuine, be yourself. There is nothing more attractive than authenticity for every girl. If you can be yourself in front of a girl, if you can be vulnerable, emotional, you can like pen down your life, your struggles, your successes, and everything in between. That is very attractive. Second, if you like a person, be direct. ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है लड़कों के साथ कि वो सोचते रह जाते हैं कि यार आई लाइक दिस गर्ल, बट पता नहीं इसके पीछे कितने लोग पड़े होंगे, बोलूँ नहीं बोलूँ, रिजेक्ट कर दिया तो क्या. नहीं बोलोगे तो तुम ऑलरेडी रिजेक्टेड हो दोस्त. एटलीस्ट ट्राई तो मारो. True. सो सो बी डायरेक्ट. वट एवर योर फीलिंग्स आर, जस्ट बी डायरेक्ट. अगर बोल नहीं पा रहे हो, लिख के दे दो, मैसेज कर दो, अभी तो कितने ऑप्शंस है, वीडियो बना दो, वॉइस रिकॉर्ड कर दो. लाइक I have done these kind of surprises for my close friends and stuff, like where I would make greetings or write down things and make videos and send them if they are in other cities. So make effort. So first, be authentic, be genuine. Second, be direct.
Third, make a bit of efforts. Fourth, understand their life journey. Like life journey is very important. एक तो अपनी बता दो और उसकी समझने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जाके जो लड़ाइयाँ होंगी दोस्त वो पीछे जो हुआ है उसकी वजह से होंगी. इंटरेस्टिंग. So be clear about that. अच्छा, एक This is टैबू how ब्रेक करते हैं, एक टैबू ब्रेक करते हैं. डू पिकअप लाइन वर्क्स? depends on again a lot of things. ओह, कंट्रोवर्शियल. ओके, ओके. मेरा ऐसा Some मानना है. do, some don't. ओह, ओह. सो सम डू, सम डोंट. हाँ. अब अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ द पर्सन इज ना. लाइक अगर किसी को चीजी पिकअप लाइन्स पसंद है तो उस पर चल जाएगी. किसी को नहीं पसंद है तो फिर थप्पड़ भी पड़ सकता है. एनीथिंग इज हाँ, पॉसिबल. रिस्क फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पे. रिस्पेक्टर तो है. रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट फिर वो भी रिवॉर्ड फैक्टर भी ज़्यादा है ना. ज़्यादा ही पसंद आ गई लाइन, तो रिवॉर्ड फैक्टर भी है. सी, सो पिकअप लाइन्स आर जस्ट अ बिगिनिंग. बहुत ज़्यादा पसंद ऑब्वियसली. आ गई ये जो फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट और अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी वेग एंड सुपरफिशियल. इट डज नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म. आपको किसी से अट्रैक्शन कई दफ़ा हो सकता है, एक बार में कई लोगों के साथ भी हो सकता है. इट डज नॉट गारंटी एनीथिंग. तुम्हारी डेफिनेशन ही अलग हो जाती है ना. मतलब मैं सोचता हूँ आयुषी एक एक टैंजेंट में आंसर करेगी, बहुत लोगों के साथ अट्रैक्शन हो सकता है. मतलब बट आई you आई will डू. get to see in the comments how many people will relate with all those tangents. क्योंकि Obviously, this is how obviously. it is. It is how Yeah, it yeah, is. yeah, yeah, yeah. And thank you for being honest with such things. I don't But know any other way. but this is how it's done, guys. This is how you do it. So interesting था ये काफी सारा take. So basically, just approach the girl, be honest with your intentions. Yeah. Small things make huge impact. And don't play games. I forgot to mention that. Don't play games. It is a major turn down. क्योंकि लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट बना के रखो. वो जो अजीब सी ट्रिक्स टेक्निक्स के वीडियोस नहीं बनते हैं कि रिप्लाई आफ्टर दिस मच टाइम, ये अच्छा. चीजें बताओ, ये मत बताओ तो मिस्ट्री बनी रहेगी. इट्स बुलशिट. टोटल बुलशिट. Agar the person you have chosen, the girl you have chosen, is a genuine person, Hmm. looks towards honesty, and you are thinking about a long term game, time pass karna hai, फिर जो करना है करो, then all of this works. But if you're looking for a long term game, please don't play games. Hmm. That will ruin your relationship, whether it is a relationship or friendship. It will ruin it. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. क्योंकि एक चीज के लिए मैं वाउच कर सकता हूँ इन एनी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एनी हस्बैंड वाइफ. इट्स मोर ऑफन लाइक when you give too much of your attention to somebody na, somewhat lose your value. You somewhat lose your value. Like you are 24x7 available. वो थोड़ा सा distance होना भी जरूरी है. Which is what I feel in every relationship, like mom, dad, kid, son, daughter, whatever it is. क्योंकि फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है. लाइक इफ यू आर Correct. ऑलवेज एंड ऑलरेडी अवेलेबल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, विच यू शुड बी आइडियली, लाइक दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पेशल. कि हाँ, एक कॉल पे आ गया बंदा या एक कॉल पे आ गई बंदी, ठीक है, दैट दैट इज नोट वर्दी थिंग. बट इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि यार 24 घंटे इफ यू आर ऑन माई फेस, आई वुडेंट मिस यू. एंड दैट मिसिंग यू इज ऑल्सो स्पेशल थिंग टू हैपन. It is important. Yeah. सो वो मिस यू भी होना चाहिए. सो दैट्स जस्ट माई टेक ऑन इट. लाइक आई डू अग्री. एंड मुझे पता नहीं था तुम भी ये वीडियोस देखती हो ऐसे ट्रिप्स I एंड ट्रिक्स don't. वाले. Never. I पता never. कैसे फिर? It is because I talk to people. Na, I understand. Observation से आता है. Most of my गुड things are कवर अप. observation. I have not been in many relationships either. और ये tricks honestly it might sound arrogant but कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. ना मुझे need लगी ऐसे कुछ भी चीज़ें try करने की कभी. Just being yourself is more than enough for me. Always has been, always will be. Okay, ma'am. Now, moving on to the next point is, what is a big no-no for a guy? Like, this is a clear big red flag. अच्छा, ये नया concept आया, red and green flag, but I'm just using it. It's a fancy thing. So, what is a big no-no for a girl, like in a guy? Interesting. Maybe you can tell for you whatever it is, but you can give a general perspective. No, yeah. It is general actually. Red flags are very generic. They are. First, how, okay, you're asking particularly for a guy. Yeah, Like if one I'm one seeing one a or guy, two big things. Yeah, just in one statement or one or two particular traits that अगर ये है ना बंदे में, तो skip करो, आगे बढ़ो. okay, nice. तो पहला, how he treats people.
That is the key criteria how it should be. That Hmm. how the person is treating other people and animals specifically, like Hmm. beings, the beings around him. That Hmm. is a big thing. So if he's different with you, different with the other person, like जैसे ही कोई और आया, सब this happens with a lot of girls कि अकेले हैं तो तब बहुत hunky dory lovey dovey experience है, and the second their best friends arrive तो full personalities flip, change. So if the person is not same with you in every scenario, not the one, skip. Okay, अच्छा. एक और चीज, एक और चीज होती है कि when you're sharing something that is very exclusive, that you not do not share normally with people, like Hmm. deep things like your emotions, like how things affect you, Hmm. Hmm. and whenever a time comes and the person is using it against you, कि okay, like let me put it into a perspective in an example. कि suppose आपने अपना कोई secret किसी के साथ share किया कि this is a pain point for me, this happened for me, but the guy in front of you अभी सामने कुछ नहीं, उसने बहुत अच्छे से सुन लिया कि हाँ मेरा जान मेरा सोना कोई बात नहीं, okay, but later when you're in an argument or in a fight, he's using that particular thing against you. That is a big red flag. He will always be using your weaknesses against you. This is never the guy for anyone. ऐसा जो बंदा है वो किसी का नहीं हो सकता. And again, then yeah, loyalty is a given. I think, I mean, is a given for me, but आजकल वो भी, it's put on label. It is open to a lot of things. So if the person is not loyal, then what's the point? So ये तीन तो बहुत ही बड़े red flags हैं. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज़ पे थोड़ा सा एक्सपांड करना था, विच आई थिंक इज़ अ वेरी रिलेटेबल थिंग दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल. कि जब जो तुमने बोला ना दोस्त वाला, कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है एंड व्हेन द फ्रेंड्स अराइव बंदा पूरा ड्रामेटिकली अलग हो जाता है. तो मेरे को उस पर एक Hmm. चीज़ एक्सपांड करनी ये है कि obviously there is a tangent of a guy in front of your parents, there's a tangent of a guy in like your own space, and then there is a tangent of a guy with his own friends. तो एक एक Hmm. कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल स्पेस का, एंड एक Hmm. कॉन्सेप्ट होता है कि तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन रहे हो. तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट कि तुम कंप्लीटली डिफरेंट वे से तुम्हें हाँ. ट्रीट किया जा रहा है, एंड एक पर्सनल स्पेस में होना दैट इज नॉट अ बैड थिंग टू डू. तो तुम्हें ये Yeah. रियलाइज करना होगा, विच इज आई बिलीव इज कि आई डोंट बिलीव इन लाइक, सॉरी, आई डोंट बिलीव इन लाइक हंड्रेड क्या बोलते हैं उसको, बेटर हाफ वाला कंसेप्ट. सो आई फील यू आर perfect in your own way. You are 100%, somebody else is 100%. You make those two 100% come together and make a 100% ka effort in a relationship. Hmm. It's not perfect, and that is the beauty of it. अगर तुम ये सीख करोगे कि हाँ ये बंदा आके मुझे ठीक करेगा, it will never work. या तुम्हें True. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी और को देनी ही नहीं है, ताकि वो Correct. एक्सपेक्टेशन कभी ब्रेक ही ना हो. A lot of time we make wrong expectations that break the Hmm. relationship rather than making the right effort. So replace that wrong expectations with right effort to build a relationship, and don't seek immediate compatibility. एक होता है वाइब और एक होता है कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी डज टेक टाइम टू बिल्ड ओवर. वाइब तुम्हारी Yes. इंस्टेंटली हो जाएगी कि हाँ बढ़िया बढ़िया, ये भी मेरे को भी, ये इसको भी यही गाना पसंद, अरे मेरे को भी यही गाना पसंद है, इसको भी छोले भटूरे पसंद है, मेरे को भी. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू हैपन. यू कैन वाइब विद 100 people, यार, but you cannot marry 100 people, right? You will marry somebody who's really really compatible with you, or you build that compatibility over time. So मुझे ये Hmm. दो चीजें ऐड करनी थी. Now coming to my third question, again being very specific, is One thing I want to point out here, the thing you said yeah. about flaws, that is again a concept of mine. I think मेरी पूरी book बन जाएगी इस podcast पे. Ayushi's concepts of relationships. But कि compatibility is defined by how compatible your flaws are, not how compatible your positive aspects are. कितने अच्छे तरीके से आप एक दूसरे को के flaws को accept कर सकते हो. That is what makes your relationship compatible. So I think that can be a Interesting. bulwark. So the last thing about from this series of question is that what's the most attractive thing about a guy, or the biggest turn on for a girl, if ये quality है बंदे में, like I'm talking about quality, like physical appearance, mental appearance, knowledge, the way he talks, the way, I know you told the way he carries himself, but anything, just that one thing that you feel like it's a wow factor in a guy. If
A guy can handle you at your worst with kindness, without judgment. That is a wow thing, and it is very rare because I am told to be dramatic, and most people and most women especially are, because again we are conditioned to be dramatic. हमने बहुत बॉलीवुड मूवीज देखी है, बहुत सीरीज देखी है, हमको बताया गया है कि हम तो हैं प्रिंसेस, हम कलेश तो करेंगे, हाँ गाइस दिस इज अ गिवन. एक तो हॉर्मोन्स का भी बहुत फैक्टर होता है, तो कलेश तो हाँ होंगे. हाँ, सो नखरे तो इफ, करने ही पड़ेंगे. and that is also an exciting part. I think that can also be fun. So हाँ, लड़के I'm प्रिंसेस तो going. नहीं बन सकते, या आई एग्री. भाई मुझे बहुत डर है कि पता नहीं क्या कमेंट्स आने वाले हैं इस पॉडकास्ट पे. The things I've said. But if a guy can handle your worst times with maturity, with kindness, and do not judge you and make you feel inferior, क्योंकि ये होता है, एंड इट कम्स फ्रॉम द ईगो पार्ट और द कंडीशनिंग ऑल्सो, कि क्या ये छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती हो. तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है. सो एग्जैक्टली. इफ यू कैन कीप दैट जजमेंट असाइड, बी काइंड एट your partner's lowest, not just for the girl again, then yes, this is the person for you. कूल, गॉट इट. अच्छे से हैंडल करो भाइयों. नेक्स्ट टाइम when the God opportunity with you. arrives, please. But this is something, when you are in the relationship, right? So what about when you are not in a relationship, like for somebody who is a stranger for you, like how would, what would that be one quality जो आप अभी जान नहीं पाए उस बंदे के बारे में, but you can judge and you can tell. Then there is not one quality, then there is a series of qualities. It would come down to understanding, then how good you can understand each other. Okay, give me top three. So I would say one, when a guy pushes you to be better without making you feel like you're something less inferior. Like I said, it's an advancement of it. When the Encouraging. person is a pusher, क्योंकि like I said कि there are two kinds of people, pushers and pullers. तो pullers आपको बहुत मिल जाएंगे, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे. When a guy is a pusher, that is definitely an attractive quality. Number two, adaptability. When he can adapt to emotions, क्योंकि if you are with a girl, emotions का tangent और graph तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा. This is a given. So you need to be adaptable with emotions and breaking down emotions. If I'm being more specific, कि if this is coming out from a girl, why? Go to the why, not the कि ये क्या था. क्योंकि हमको पता है कि हम बहुत, आई डोंट वांट टू कस, बट बहुत अजीब हरकतें करते हैं. हम लोग करते हैं. इट हैपेंस, गर्ल्स आर Yeah. बिल्ट दैट वे. तो वो सब होगा. बट इफ यू कैन ब्रेक डाउन टू द वाई पार्ट एंड यू कैन टैकल दैट, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव. कोई भी पिघल जाएगा, कोई भी लड़की हो कितनी ही सख्त हो, वो पिघलेगी. सो दैट इज नंबर टू. नंबर थ्री, if you can just show conviction in your words, in your actions. Conviction is a huge attractive word, क्योंकि ज़्यादातर लोग, even including myself, commitment से बहुत भागते हैं. This is an issue even I'm working on. If a guy can be convicted to whatever it is, चाहे वो उसका knowledge हो या learning हो, self growth हो, transformation हो, profession हो, या उसका जनरल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, if a guy is convicted or dedicated to whatever it is that he's pursuing, whether it is a girl, whether it is a profession, whether it is knowledge, that is also a very attractive quality. I think I've pointed down ten qualities till now since we started. Boys, take notes. कोई बात नहीं, द मोर द मैरियर. मेरी तरफ से और सारे भाइयों की तरफ से आप सबको, आपको तहे दिल से थैंक यू. पूरी I तरीके से really hope गाइड that किया जा I'm रहा है यहाँ being पे. relatable and accurate, and that this helps, because it's like, again, I don't know any other way than being genuine or honest. This is my perspective, this is my perception, guys. Please don't later blame me, shame me for this कि इन्होंने तो बहुत high standards बता दिए, दीदी ऐसा नहीं हो पाएगा. Please. This is perception. It differs for all kinds of girls. Then again, आप जिस भी लेवल पे हो, हर लेवल के इंसान दुनिया में है, आपको आपके लेवल का कोई ना कोई मिल जाएगा. नहीं, बस बात ये भी तो है ना कि यू कांट नो अबाउट थिंग्स विदाउट आस्किंग. Yeah, लाइक इट्स true. बेटर टू नो. Oh yes, communication. I forgot to mention that I'm a communications coach. But again, I feel it like ki loyalty and communication is a given. So I don't हाँ, mention it in specifics, but that is.
an important thing. भाई और बहनों बतियाते आना चाहिए तो बी But yeah, let's see. हाँ तो बी गुड एट कम्युनिकेशन बी ऑनेस्ट बी रॉ and be approachable. I think being approachable is the skill very few people have. Like without when you are a stranger, काफी कम लोग होते हैं जो actually में approachable लगते हैं. So I think being approachable is also one of the skills. कि हाँ बंदे को लगे पूछ सकते हैं इसे पूछ बातें की जा सकती है बंदे से. It doesn't look like a gangster. So uh, I think that I would add to what Aishi said. So very interesting. Thank you. हम सब की तरफ से big round of applause. Okay. Hope I was helpful. And मैंने बहुत ज़्यादा दिल नहीं तोड़े. नहीं 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 तो quickly we'll start with the rapid fire and end the podcast. Oh, there's a rapid fire. Nice. Yeah. This is something I'm scared of. Nah, it's gonna be fun. We'll start with halke phulke questions. So let's be quick. What's your favorite food? Favorite food depends on the mood, but I really like pav bhaji. Okay. What's your favorite movie and why? Divergent, hands down. I love Divergent. I have seen it 100 million, I don't know how many times, and I really love the perception of the movie. Also, I really love the fictional character of Four and Tris, their chemistry, and the overall Divergent thinking concept. I love that movie. It's the best sci-fi movie. I think I would make my children see कि ये तो देखना पड़ेगा. And I think I've made a lot of guys ये and मेरे girls डीएनए में है. ये follow. मेरे डीएनए में है ये मूवी. It is passing down हाँ, through my ये DNA. अगर इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू मी, ये मूवी तुमको देखनी पड़ेगी, मैं जबरदस्ती दिखाऊंगी. नहीं मैंने देखी है. आई हैव सीन डाइवर्जेंट 2 times. आई थिंक 3 है. इंसर्ज उसके 3 Yeah, there are सीरीज three भी आई parts, थी. but the first one is फर्स्ट something वन इज द else. बेस्ट. इट वाज अ नॉवल. मतलब नॉवल के ऊपर ही बेस्ड है. Yes, yes. I know. Interesting. Moving on. If you could change one thing about yourself, what would it be? Undermining myself. I undervalue myself a lot. Nice. Undermining. अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. Something different. Oh God. Might make you brainstorm. So, if you had ₹1 crore in your bank account right now, what would be the first thing you do? First thing, I'll pay off the debts of the home loan. Me for Then I would yourself. invest for myself. Like, okay, so मतलब hypothetical situation कि दिल से क्या करना चाहती हूँ types. हाँ मतलब नहीं एक्चुअल में जैसे मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ अभी आ जाएगा तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उधार दे दूंगा लोगों का. बट मैं पहले नहीं दूंगा वो उधार लोगों का. हाँ. पहले मैं अपने लिए So कुछ I'll break करूंगा. it सो down into investments कि यहाँ यहाँ invest करना है. I'll take a property for me and then I'll invest in my coaching business. ओके एनीथिंग एल्स. Travel और क्या. Like yeah, like having my own property is a goal because I want my own space with my only my name on it, nobody else's. So that would be one. Then investing in my coaching business because I want to scale up, and travel, of course, because nothing is more important than experiences. ट्रू. सो नेक्स्ट वन इज फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. अरे यार, I don't have any all time. I have a full playlist, full blown playlist, और हर अच्छा मूड के हिसाब से. जेनर बता दो यार. तुम तो एम्बीवर्ट लोगों का यही प्रॉब्लम है. मतलब हर हाँ मूड के ये लिए एक प्लेलिस्ट है. नहीं. जो दो तीन ऑप्शन दे दो चलो कम से कम. Um, no, it's like okay. I like really like Arijit Singh songs. I like Atif Aslam. So I think if I'm talking in the romantic genre, it would be Beria, a song by Atif Aslam, and I think Shreya Ghoshal. I really like that song. For motivational, it would be Never Say Never, Justin Bieber, Jaden Smith. I really like Taylor Swift, Liam Payne, One Direction. All songs One Direction. I loved One Direction. So नाइस. these would be my favorites. नाइट चेंजेस. Night Changes. There are a lot. There are many. The story of इंटरेस्टिंग. my life is a very good one. Story of my life is a viral one. Yeah. Describe spirituality in one word. One word. Yep. Consistent growth. Sorry, there are two words. So growth. Interesting. If you could ask for one wish, what would that be? One wish. Becoming my best potential. Becoming your. Best potential. Like I know, like the version that I see that this is the level I can reach. So reaching that level would be my wish. One thing that you regret so far in life. There are quite a few.
But Top. not dating enough. Not dating enough. Choosing math is a big regret that I have. Then not choosing a, like a degree that would have helped me scale up and speed up in what I'm doing right now. Because now I know कि अगर ये किया होता, mass communication किया होता, so it would have helped me. So that is with the peer pressure कि जो बता दिया वो कर लिया. That is a regret. Not joining martial arts earlier, that is a regret, and not dating enough, that is also a regret. I should have I get dated it. more. I get it. That seems like a pain point. I get it. So आज काफी सारी एडवाइस दी है, थोड़ी सी खुद अप्लाई करके आई गेस यू कैन बिगिन द जर्नी. इट्स नेवर से नेवर. And no, it's not like I have not begun my journey. It's like I'm way too clear with what I want. Oh. And until I get it, I don't do casual thing. ऐसा नहीं है कि I don't have opportunity or chances कि I could date. Not dated enough means not dated with the right frequency of people. Like I have not given much chance because I was busy in other things. Quintessential Indian girl, like I told you. So that could have been different. नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता कि तुम लड़की हो और तुम्हें अपॉर्चुनिटी ना हो. मतलब यू हाँ, इजीली गर्ल्स कैन इजीली डेट. लाइक बम्बल पे लड़का ऐसे राइट राइट स्वाइप करता रहेगा, लड़कियों को बिना पैकेज के ही भर भर के लाइक्स आएंगे. तो दैट्स टिपिकल थिंग. that's true. Yeah, so that was the rapid fire thing. I hope you enjoyed it. Oh, हो गया. And yeah, yeah, don't worry, इतना भी नहीं डराना कि अगली बार वापस ही ना हो. So let's keep नहीं it नहीं. at that. And one last question of the podcast to end it up is that if you could speak to 15-year-old Ayushi and nobody could hear you, what you are saying to that little girl, what would that be? Okay. Dear Ayushi, first of all, you're amazing, awesome, beautiful the way you are. Stop underestimating yourself. Take more risks, date more, try a lot of things, and give it your all. Just go all out. Do not hide or diminish your personality. Stop people pleasing and take better care of your health. That's what I would say. Any specific message that you would give to any girl out there? Girls, same thing. Stop undermining yourself. Stop living for the validation of others, which is a conditioning. It will take a lot of effort and time to get over it, but do it. Do your part. Practice self love. And before you give yourself completely to the other person, give yourself complete attention. Know each and every fragment of you, and then just give yourself away. But date more, experiment. I get that. That's the theme of the podcast today. Like experiment with life, be But with the approachable. right people, please do not Yeah, 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 allow trash in your life. Another big one. Do not avoid yeah, red flags. yeah, Do not allow trash in your life. yeah, yeah. And don't believe when people say this that you are this particular kind. कि तुम तो ऐसे ही हो. Everything is changeable. And if तुम ऐसे ही हो, so that is for a reason. There are no mistakes in this universe. If you are Exactly. something, there is a reason for it. If you have went through something, either it is very good or terrible, there has been a reason for it too. So embrace it all. और ये पॉडकास्ट देखने के बाद तो ट्रैश को अलाउ भी मत करना, रेड फ्लैग को अलाउ भी मत करना, वरना हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी. दैट विल बी अ रेड फ्लैग फॉर अस. Right. तो Correct. Who are actually trying and making effort, they deserve a fair chance. I या empathize या with men. या Hashtag not all women. Hashtag not all women. नहीं नहीं भाई, नहीं. आजकल ऐसा हो रहा है कि द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि अगर लड़का लड़के के लिए स्टैंड ले रहा है ना, तो वहीं पे गलत हो गया. वुमन शुड बी एबल टू स्पीक फॉर अ गाइस, तब वो बात की वैलिडेशन That's होती है. totally, yes, that's bullshit. ये कुछ लोगों का है वो ये फेक फेमिनिज्म है. This is fake अच्छा. feminism. हाँ. Totally. Obviously a lot of it has become fake now, but sort of a sad reality. That's because people are influenced, right? So let's keep it at that. बढ़िया. एकदम क्या बोलते हैं, it's a 101 for dating relationships, getting approached or approaching a girl, and experimenting, and a lot of things about relationship we spoke about. So very interesting podcast. तो इज्जत रख I लेना think हमारी. in these two podcasts हमने mini workshops launch कर दी हैं on like communication, then public speaking, then hope रोकनो, and types of healing. We have covered a lot of ground. Nice. Yeah. Good So job. guys, High five. definitely.
हाई फाई हाई फाई हाई फाई, तो मुंबई से इंदौर हाई फाई जा रहा है यहाँ से. एंड Power of डेफिनेटली, technology. yes, definitely check out the first episode if you're interested in public speaking, if you're interested in healing, if you're interested in mental health. We spoke about in depth in the episode. And this one is for my guys out there who are trying to find some love in life. Jao, fateh karo, khush raho. And to the girls out there, definitely go for the quality over quantity. And that's it. That's Neeraj and Dream with Neeraj signing out with Ayushi. Hope you guys enjoyed the podcast. Thank you, Ayushi, for the episode 2. Nice. This was nice. Ambivert Aish signing off with Dream with Neeraj. Nice. Yo. Good tagline. But on a serious note, I had a lot of fun. It was a blast. I loved it. Thank you. I even had a lot of insights for myself. And I think I have not opened up this much in a digital space as of now. So thank you for this opportunity. It was a lot of fun. Thank you. Yeah, you don't need to be so formal. You are the love guru for us now. So it's okay. Oh God. Love Nah, good. yeah, yeah. Okay. At least I want We guys to should stay comment down. supportive. Yeah, I हाँ. want guys to comment down कि जिन जिन लोगों ने advice use की है, go to Ayushi's channel. I'm gonna drop the links to her channel. Also comment in the section for this video so that we guys know you are using the techniques, whatever it is from Ho'oponopono to dating. So that's it. Peace out. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.